Please do not forget to subscribe the channel and please press the bell icon. Okay students, good morning once again. Let's continue with the topic applications of midpoint formula and centroid of a triangle, and today we will also be discussing how to find out the incenter of a triangle. Incenter of a triangle. Before that, let's discuss what is the centroid of a triangle, what is the incenter of a triangle. बच्चों, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि when we draw the medians, these basic concepts are very very important students. Remember, so here AD, BE and CF, these are three medians. AD, BE and CF are medians of a triangle. We have discussed earlier also, median, it is a line segment joining midpoint of any side to its opposite vertex. Midpoint of any side to its opposite vertex. So here D is midpoint of BC, opposite vertex is A, AD is one median, E is midpoint of AC, opposite vertex is B, so BE is another median, F is midpoint of AB, opposite vertex is C, so CF is the third median. So AD, BE and CF are the medians of triangle ABC. Here okay, now remember, there is one very important property of a median. See this point G, that is point of intersection of medians, point of intersection of medians of a triangle is known as centroid. Point of intersection of medians of a triangle is known as centroid of a triangle. So here the centroid is G. This point G is the centroid of triangle. Okay, now very important property which will help you to find out the coordinates of centroid, which we have discussed yesterday. Now centroid of a triangle divides the medians in the ratio 2:1, 2:1. It means this is G is centroid, AG is to GD, AG upon GD equal to BG upon GE equal to CG upon GF, and this is equal to 2/1. Right? So this is a very important property.
that centroid of a triangle divides the medians in the ratio 2:1. Okay, so now let's find out coordinates of centroid. See, this is the line AD. G is the centroid. G is the centroid. Let's assume that let the coordinates of A be x1, y1, B x2, y2, and C x3, y3. Now we have B is midpoint of BC. D is midpoint of BC. Therefore, coordinates of D are coordinates of D. Let's see. D is the midpoint of BC. This is x2, y2, and this is x3, y3, and A is x1, y1. Coordinates of D will be x2 plus x3 upon 2. मिड का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों. y2 plus y3 upon 2. Coordinates of D are x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2. So D here, this is x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2, and we have just written here in the previous one, that is G divides AD in the ratio 2:1. So let's apply the section formula to find out the coordinates of G, that is x comma y. So here we get x is equal to, the formula you remember, m1 x2. So here we have 2 into x2 plus x3 upon 2 plus m2 x1, 1 into x1 upon m1 plus m2. So here it is, 2 cancel, we get only x1 plus x2 plus x3 upon 3. Similarly, y is equal to 2 into y2 plus y3 upon 2 plus 1 into y1 upon 2 plus 1. So again 2 cancel here. So here we get this is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. So these are the coordinates of centroid of a triangle. This is the formula to find out the coordinates of centroid of a triangle, students. So point of intersection of medians is known as centroid. Point of intersection of altitudes is known as orthocenter. Point of intersection of angle bisectors is known as incentre, and point of intersection of perpendicular bisectors of the sides of a triangle is known as circumcenter. So these are important points, and also you need to remember median of a triangle divides the centroid of a triangle divides the
medians in the ratio 2:1, right? Next is in center of a triangle. बच्चों इन सेंटर जैसा कि अभी डिस्कस किया था, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ angle bisectors of a triangle. That is, the situation is like this. AD bisector of angle A, BE bisector of angle B, CF bisector of angle C. This point is known as in center of the triangle. Point of intersection of angle bisectors of a triangle is known as in center of a triangle. Now remember here, very important thing, this we are using, will be using in the formula to find out the in center. A, capital A, इसका जो अपोजिट साइड है BC है, इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे. लेंथ ऑफ BC विल बी स्मॉल a. B का अपोजिट है AC, लेंथ ऑफ AC विल बी स्मॉल b, एंड AB का अपोजिट है C, तो लेंथ ऑफ AB विल बी टेकन एज स्मॉल c. स्मॉल ABC represents the length of the sides BC, CA and AB respectively. So here the formula to find out the in center of a triangle, will not be deriving this, just you need to remember this formula. In center of a triangle is given by the formula AX1 plus BX2 plus CX3 upon A plus B plus C, comma AY1 plus BY2 plus CY3 upon A plus B plus C. See, this is not given in your NCERT book. It is from NTSC point of view. This is from NTSC point of view. In center of a triangle is given by AX1 plus BX2 plus CX3 upon A plus B plus C and AY1 plus BY2 plus CY3 upon A plus B plus C. For your knowledge, this formula has been derived with the help of the concept we have proved in chapter number 6, similar triangles, that the bisector of a triangle divides the opposite side in the ratio of sides containing the angle. That is BD upon DC is equal to BA upon AC. हमने प्रूव किया था internal bisector theorem. So this is BD upon DC is equal to BA upon AC. तो बेटा इसका यूज करके आप इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, राइट? द कॉन्सेप्ट we will be learning in class 11th. Similarly, how to find out the orthocenter and circumcenter you will be learning in class 11th coordinate geometry, right? Let's take an example to find out the in center of a triangle. Coordinates of A are 2, 3, B minus 2, 1, and C 3, minus 2.
You have to find out. First part we find out the centroid of a triangle, very easy one. And second part we'll find out the incenter of the triangle. Incenter. First let's find out the centroid of a triangle. Centroid of this triangle, बच्चों अभी अपन ने फॉर्मूला प्रूव किया था, x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. So that the centroid of this triangle will be 2 minus 2 plus 3. 2 minus 2 plus 3 upon 3. 3 plus 1 minus 2 upon 3, and that comes out to be 3 upon 3, that is 1, and here 4 minus 2, that is 2 upon 3. So these are the coordinates of centroid of a triangle. Very simple one. Now let's see how to find out the incenter of the triangle. फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, ax1, यहां पे हम लिख लेते हैं, दिस इज x1 y1, the other one is x2 y2, and this is x3 y3. अभी हमने कहा था a का अपोजिट होता है स्मॉल a, तो यहां पे हम BC की लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, B का अपोजिट होता है स्मॉल b, मतलब AC की लेंथ फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, और कैपिटल C का अपोजिट होता है स्मॉल c. So we'll find out the length of AB, that will be equal to C using distance formula. So let's see, 3 plus 2, 5. I'm just doing it under root 3 plus 2, 5 square, that is 25, plus minus 2 minus 1 minus 3 square, that is 9. So we are getting this as under root 34. Let's find out B, AC, under root 3 minus 2, 1 का square 1, minus 2 minus 3, minus 5 का square 25. So that is root 26. C, 2 plus 2, 4. So 4 square, that is 16. 3 minus 1, 2. 2 का square मतलब 4. That comes out to be root 20. Okay. So these are all are not perfect squares. So let's leave it as it is. Now let's see the formula. That is ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. So the coordinates of incenter will be a, this is root 34, x1, 2. So root 34 into 2 plus b root 26 into x2, this is minus 2, plus c, that is root 20 into x3, x3 is 3, upon a plus b plus c, that is root 34 plus root 26 plus root 20. Similarly, ay1, so we get here root 34 into 3, this is 3 root 34, root 34 into 3 plus by2 root 26 into 1 plus cy3 root 20 into minus 2 upon root 34 plus root 26 plus root 20. So finally what we get, this is 2 root 34 minus 2 root 26 plus 3 root 20
upon root 34 plus root 26 plus root 20, and here it is 3 root 34 plus root 26 minus 2 root 20 upon root 34 plus root 26 plus root 20. These are the coordinates of the incenter of a triangle, which is the point of intersection of angle bisectors of a triangle. बच्चों यहाँ पे रूट 34, रूट 26, रूट 20 आया था. परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं थे इसलिए हमने आगे सॉल्व नहीं किया. यदि परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिलेगा. ओके Okay students, our next topic is area of triangle. Area of triangle. This has been deleted from CBSE syllabus for this year. इस साल के लिए डिलीट किया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो कि हम कोलिनियरिटी में लगा सकते हैं, क्योंकि हमने एक टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूले में लीव किया था, छोड़ दिया था, दैट इज कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स. वो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स हम अब यहाँ डिस्कस करेंगे. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो डेफिनेटली यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला. It's a very easy one. I'll tell you how to remember. Here it is. Coordinates of A are x1, y1, x2, y2, x3, y3. बच्चा आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं. यहाँ पे ABC किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं. So here the formula for area of triangle is equal to absolute value of half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन इसलिए लगाया बच्चों, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. वी हैव यूज्ड द साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. हम कभी भी ये नहीं कह सकते बेटा कि इस बोर्ड का एरिया -20 स्क्वायर फीट है या -10 स्क्वायर मीटर्स है. विल से दैट द एरिया ऑफ दिस बोर्ड इज 10 स्क्वायर फीट और 10 स्क्वायर मीटर्स. सो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसीलिए हमने यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाया है. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है बच्चों, यदि आपके पास आया -3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 विल कंसिडर इट एज 3 ओनली. इफ इट इज पॉजिटिव देन नो प्रॉब्लम. इफ इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इट विल बी टेकन एज 5 ओनली. So remember, as area is always positive, so we have to put the sign of absolute value here. Okay. अब देखिए बच्चों, अभी मैंने कहा था कि आपको याद रखने का तरीका बता देते हैं. सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. सबसे पहले हाफ, ब्रैकेट के बाहर सारे x लिखना है बच्चों. आपको ब्रैकेट के बाहर सारे x लिखना है. ब्रैकेट से बाहर स्मॉल ब्रैकेट, पहले आप ब्रैकेट्स बना लीजिए. 3 ब्रैकेट्स बनाना है. 3 ब्रैकेट्स वी हैव मेड. ब्रैकेट से बाहर सारे x लिखेंगे. ऑल x आउटसाइड द ब्रैकेट. ब्रैकेट से बाहर सारे प्लस साइन लगाना है आपको, तो प्लस साइन लगा दिया. ब्रैकेट के अंदर y लिखिएगा. दिस इज y
और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन होगा, y y माइनस का साइन। अब आप देखिए बच्चों 1 2 3, अगला शुरू होगा 2 से, 2 3 1, और नेक्स्ट शुरू होगा 3 से, 3 1 2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। 1 से स्टार्ट किया 1 2 3, नेक्स्ट वाला 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 1, नेक्स्ट वाला 3 से स्टार्ट करेंगे 3 1 2, like this. You can easily remember this formula. Practice it at least 5 times how to write this formula. You will be definitely able to remember it. We'll be doing some examples based on this now. So students, let's solve one question. Be careful about the sign. Sign का बहुत ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन है find the area of triangle whose vertices are whose vertices are 2 3. Let's draw a rough figure, it becomes easy to solve. Minus 2 1, and third vertex is 3 minus 2. This is A, B, C. Now here it will be, यहां से शुरू करते हैं, चलिए x1 y1, x2 y2, x3 y3. Let's put all the values. Area of triangle ABC is equal to absolute value का साइन पहले, फिर हाफ लिखना है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, absolute value close. And now we are putting the values. x1 is 2, y2 minus y3, y2 1 minus minus 2, 1 minus minus 2, plus x2 minus 2, y3 minus y1, minus 2 minus 3, plus x3 y1 minus y2, 3 minus 1, which is equal to absolute value half, 2 into minus minus plus, 1 plus 2 will become 3, so 2 into 3, plus minus, this is minus 2 into minus 5 plus 3 into 2, and that is absolute value of half. 2 into 3 is 6, plus 10 plus 6, 10 plus 6 16, plus 6 is 22, 22 by 2 is 11, so this is 11 square units is the area of this triangle. 11 square units. So remember, it's very easy to solve, very easy to solve. Next one is example number 2. Find the value of P. For which the area of triangle formed by the vertices P, 2P minus 2, 6 and 3, 1 is
10 square units. Now the area is already given to you as 10 square units. We have to find out the value of P. So this is your x1, y1, x2, y2, x3, y3. बच्चों इस तरीके से मेंशन कर लें तो हमें वैल्यूज रखने में आसानी होती है और गलती नहीं होती बेटा. So here we have area of triangle equal to 10. तो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू हाफ x1 y2 minus y3. डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, 6 minus 1 this is 5 plus x2 minus 2 y3 minus y1 तो 1 minus 2p plus x3 3 y1 minus y2 2p minus 6 equal to 10, which is already given. Now let's simplify this. Half 5p minus 2 into 1 minus 2 minus 2 into minus 2p 4p plus 3 into 2p 6p 3 into minus 6 minus 18 equal to 10. So this is absolute value of half 5p plus 4p 5p plus 4p 9p plus 6p 15p minus 2 minus 18 minus 20 equal to 10. अब बच्चों जैसा कि यहाँ पे जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रिमूव करते हैं तो राइट हैंड साइड में आपका प्लस माइनस साइन आ जाए. दैट मीन्स से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव absolute value of x is equal to 3, this means x is equal to plus 3 or minus 3, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x is equal to plus minus 3. तो यहाँ पे जब हम absolute value का साइन हटाएंगे तो RHS में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आ जाएंगे. So here we get half 15p minus 20 equal to plus minus 10. Right? Now let's take the positive sign. पहले प्लस साइन लेते हैं फिर माइनस साइन लेंगे. Take the positive sign. 15p minus 20 equal to 2 into 10. This is 20. 15p is equal to 40. p is equal to 40 by 15. That is 8 upon 3. P is 8 upon 3. Secondly, when we take minus sign, we'll get 15p minus 20 equal to 2 into minus 10 will be minus 20. That means 15p is equal to 0. Therefore, p is equal to 0. So your answer is p is equal to 8 by 3. And p is equal to 0, right? Okay students, so the next part is area of quadrilateral. Area of quadrilateral. अब इसके लिए हम कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे बच्चों. What we are going to do, डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं. With the help of example you will be able to understand how to find out the area of quadrilateral. Suppose if the vertices are given in order, बच्चों यहां जरूर ध्यान रखिएगा, vertices are taken in order. Very important point here. In order. मैंने इससे पहले भी बताया था बच्चों. फिगर बना लें आप. Quadrilateral रफ फिगर बनाना है. ABCD is a quadrilateral. टेकन इन ऑर्डर मतलब या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए. मतलब यहां से ऐसे वर्टाइसेस ले लो या यहां से ऐसे वर्टाइसेस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एरिया पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए. मतलब पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी.
या पहला ADCB like this also, doesn't matter, but it should be taken in a proper order. So if the coordinates are -2 -2 -2 -2 5 1 2 4 -1 5. So in this case what we need to do, join one diagonal. कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर ले, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, या तो AC ज्वाइन कर दो या BD ज्वाइन कर दो, anyone. So join one diagonal. We have joined here AC. Join AC. अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हो गए. Two triangles are there. One is triangle ABC. इसका एरिया निकालेंगे. The other one is triangle ADC. इसका एरिया फाइंड करेंगे. अब इसमें गलती ना हो इसलिए यहां पर वर्टाइसेस जरूर लिख लें बच्चों. This is -2 first one, 5 1 next one, and 2 4 is the third one. और यहां पर ADC लिखा हुआ है तो -2 then -1 5 and 2 4. Okay, ABC ADC. Now we'll find out the area of this triangle ABC and also the triangle area of triangle ADC by using the same formula. तो पहले हम ABC का एरिया निकालते हैं. अब मैं थोड़ा स्पीड में कैलकुलेट करके बताऊंगा बच्चों आपको. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to absolute value, very important, half x1, ये है आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3, and here it will be x1 y1, x2 y2, x3 y3. Half x1 -2, y2 minus y3, 1 minus 4 minus 3, -2 into -3 हो गया 6, plus x2 is 5, y3 minus y1, 4 plus 2, 6 into 5, 30, plus x3, 2 into y1 minus y2, -2 minus 1, -3, 2 into -3, -6. So here we have plus 6 minus 6 cancel. So area of triangle ABC is 30 by 2, that is 15 square units. 15 इसका एरिया मिल गया. Now we'll find out the area of triangle ADC. So area of triangle ADC. Again the same thing students. We have to put the absolute value sign, which is very important here. Absolute value का साइन लगाना बहुत जरूरी है. यहां लगा दिया half. Again I am doing it directly. x1 -2 into y2 minus y3, 5 minus 4, 1, -2 into 1, this is -2, plus x2 minus 1, y3 minus y1, 4 plus 2, 6 into -1, this is -6, plus x3, 2 into y1 minus y2, 2 into -2 minus 5, this is -7, और -7 into 2 हो जाएगा -14, like this. So here we get absolute value of half into -2 minus 6 minus 8, or -8 minus 14 is -22. Absolute value we have -22. ओके, तो इसका हाफ हो गया -11, so this is equal to 11 square units. Very important बच्चों. यहां पे गलती क्या होती है मैं अभी बताऊंगा आपको. यहां है 11 square units. So now area of quadrilateral ABCD
will be equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC, and that comes out to be 15 plus 11, which is equal to 26 square units. ओके बच्चों, यहाँ पे जनरली एक छोटी सी गलती हो जाती है कई बार, और वो छोटी सी गलती आपका सॉल्यूशन गलत कर देती है। वो गलती क्या है देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर तो सारी वैल्यूज पूरा कैलकुलेट करके पॉजिटिव ही आया था, तो आपने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पॉजिटिव आया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 15 हो गया। लेकिन यहां पर नेगेटिव आ रहा था -11, so sometimes we write it as area of triangle ADC is -11। अभी बताया था बच्चों कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे घर के फ्लोर का एरिया -200 स्क्वायर फीट है? -200 मतलब है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए ये एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे गलती है बच्चों, और गलती ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन कंसिडर नहीं किया, इसलिए साइन रिमूव नहीं किया यहाँ पे। तो जब यहाँ पर ये सिचुएशन होती है तो आप फिर यहाँ गलती क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, सर नहीं तो बोला था ऐड कर देना, तो हम कर देंगे। और 15 प्लस -11 दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। सर हमारा तो आंसर ही नहीं आया, आपने तो इतना बताया था, हमारा आंसर ही नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम आती है, दिस इज अ वेरी माइनर मिस्टेक, बहुत छोटी सी गलती है लेकिन वो आपका आंसर गलत कर देगी। सो बी केयरफुल एट दिस स्टेज। ओके, सो we have discussed today the coordinates of centroid of a triangle given by the formula x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. Coordinates of incenter of a triangle, that is ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, and ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. Also area of triangle, this is equal to half absolute value of half x1 y2 minus y3 in the bracket plus x2 into y3 minus y1 in the bracket plus x3 into y1 minus y2 in the bracket, and absolute value sign closed, right? So this way absolute value, we have put a sign of absolute value because area is always considered as positive, जिसका कि एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे देखा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आना चाहिए 26, लेकिन हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन यदि नहीं लगाया है तो हम उसका कैलकुलेट करेंगे 4 स्क्वायर यूनिट्स। इंस्टेड ऑफ एडिशन इट इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड, विच इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है कि हम एक ट्राइंगल में से कुछ पार्ट, कुछ एरिया माइनस कर दें और वो आपका पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाए। यहाँ पे दोनों को प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। सो दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज लेफ्ट, that is collinear points. We'll be discussing it in the next class, which is a very important topic again, क्योंकि बेटा उस टॉपिक से 1 marks, 2 marks, 3 marks, 4 marks चारों वेराइटी के क्वेश्चंस बन जाएंगे। So tomorrow we'll be completing the chapter. The worksheet will be given to you, uploaded, and you are supposed to solve the worksheet and submit it back. Okay, thank you, have a nice day.